Have you ever stopped to look around your room? Pick up your smartphone, check the label on your t-shirt, or look at the bottom of your coffee mug. There is a very high chance you will find three simple words: made in China. It's a phrase so common that we barely even notice it anymore. But think about what this really means. It means that a single country, thousands of miles away, is producing the majority of things we use in our daily lives. From the toys our children play with to the complex electronics that power our world, China's presence is everywhere. This incredible dominance didn't just happen overnight. It is the result of a calculated, decades-long journey that transformed a poor, isolated nation into the undisputed manufacturing capital of the world, a global factory that never seems to sleep. Today, on January 18, 2026, the world is so deeply interconnected with China's manufacturing ecosystem that any small disruption there sends shockwaves across the entire globe. If a factory in a Chinese province shuts down, it can mean delays for a new car model in Europe or a shortage of a popular gadget in America. This dependency is staggering. How did one country manage to build such an intricate and powerful system? How did it convince the world's biggest companies, from Apple to Zara, to set up their production lines on its soil? The story of China's rise is not just about economics. It's a fascinating tale of political vision, strategic planning, and the sheer hard work of hundreds of millions of people who collectively lifted their nation out of poverty and onto the world stage. To truly understand the scale of this transformation, we need to turn back the clock. Imagine a world where made in China meant cheap, low-quality trinkets. Now, contrast that with today, where the most advanced smartphones and high-tech drones proudly bear the same label. This journey from a producer of simple goods to a hub of advanced manufacturing is the core of our story. We will explore the key decisions, the strategic masterstrokes, and the immense challenges that paved this path. It is a story that involves visionary leaders, experimental economic zones that acted like giant laboratories, and the creation of an infrastructure and supply chain network so efficient that no other country could compete for decades. This essay will dissect the phenomenon of the world's factory. We will go back to the 1970s to see the state of China before its economic miracle began. We will analyze the policies that opened its doors to the world and attracted a flood of foreign investment. We will look beyond the simple explanation of cheap labor and uncover the complex ecosystem of logistics, skilled workers, and government support that truly powered its growth. We will also examine the challenges China faces today, such as rising costs and geopolitical tensions, and how the world, including India, is responding to this new reality. So, let's begin this incredible journey to understand how China built its manufacturing empire. To grasp the magnitude of China's achievement, we must first travel back to the late 1970s. At that time, China was a completely different country from the economic powerhouse we know today. Decades of rigid communist ideology under Mao Zedong had left the nation isolated and economically stagnant. The country was largely agrarian, with a vast population living in extreme poverty. The state controlled every aspect of the economy, from what factories produced to what farmers could grow. There was little to no private business, and foreign investment was practically non-existent. The idea that this poor, closed-off country could one day become the world's factory would have seemed like a wild fantasy to anyone at the time. This bleak picture began to change dramatically after Mao's death in 1976. A new leader, Deng Xiaoping, came to power. Deng was a pragmatist. He had witnessed the failures of the previous economic policies and understood that radical change was necessary for China to survive and prosper. He is famously quoted as saying, "It doesn't matter if a cat is black or white, as long as it catches mice." This simple phrase captured his revolutionary new approach. Ideology was less important than practical results. He believed that if market-oriented policies could make China rich, then the country should adopt them. This was a monumental shift in thinking for the Communist Party of China. This new pragmatism led to the launch of the historic Reform and Opening Up policy in 1978.
This was a two-pronged strategy. The reform part involved gradually introducing market mechanisms into the domestic economy. For example, farmers were allowed to sell their surplus produce in the open market after fulfilling state quotas, which gave them a powerful incentive to produce more. Small private businesses were slowly permitted to operate. The opening up part, often called the open door policy, was even more radical. It meant ending China's long-standing isolation and actively seeking foreign investment, technology, and trade to modernize the country. It was a formal invitation to the rest of the world to come and do business with China. Deng Xiaoping's vision was not to abandon socialism entirely, but to create what he called socialism with Chinese characteristics. He understood that to build a strong nation, China needed capital and modern technology, which it did not have. The only way to get them was from the developed capitalist countries of the West and from its neighbors like Japan. The open door policy was a calculated risk. It opened the floodgates for foreign companies to enter China, bringing with them the money, machinery, and management expertise that China desperately needed to kickstart its industrial revolution. This decision set the stage for the most explosive economic growth in human history. The open door policy was a brilliant idea, but how do you implement such a radical change in a massive, centrally controlled country without causing chaos? Deng Xiaoping's answer was to experiment on a small scale first. Instead of opening up the entire country at once, the government designated specific areas as special economic zones, or SEZs. These zones were designed to be laboratories for capitalism. Within these designated areas, different economic rules would apply. They offered tax incentives, streamlined regulations, and better infrastructure to attract foreign companies. The idea was simple. If the experiment worked, the model could be replicated and expanded across the rest of the country. The most famous and successful of these experiments was a small fishing village called Shenzhen, located just across the border from the bustling capitalist metropolis of Hong Kong. In 1980, Shenzhen was declared the first special economic zone. Its transformation was nothing short of miraculous. In just a few years, this quiet village of 30,000 people exploded into a booming industrial city. Foreign companies, particularly from neighboring Hong Kong and Taiwan, flocked to Shenzhen to take advantage of the cheap land, abundant labor, and business-friendly policies. They set up factories to produce textiles, toys, and simple electronics, exporting these goods to the global market. The Shenzhen model was a roaring success. It proved that Deng's strategy worked. The zone attracted billions of dollars in foreign investment, created millions of jobs, and became a major engine of economic growth. Workers from all over rural China migrated to Shenzhen in search of better opportunities, providing the endless supply of labor that the new factories needed. The city became a symbol of China's new dynamism and ambition. Seeing the incredible results, the Chinese government went on to establish more SEZs along its coast, creating a string of industrial hubs that would become the foundation of its manufacturing empire. Each zone acted as a magnet for foreign capital and a gateway for Chinese goods to enter the world. What made Shenzhen and other CZs so special was that they acted as a buffer. They allowed China to integrate with the global economy and learn from the capitalist world without having to immediately dismantle its entire state-controlled system. These zones became training grounds where Chinese managers and workers learned modern production techniques and business practices. The success story of Shenzhen was not just about building factories. It was about building knowledge, experience, and confidence. It created a blueprint for rapid industrialization that China would use to transform its entire coastal region into the world's workshop over the next 2 decades. Many people believe that China's rise as a manufacturing hub was solely due to its massive population and cheap labor. While an abundant and low-cost workforce was certainly a crucial starting point, it is a vast oversimplification of the story. Many other countries in the world have cheap labor, but none have come close to replicating China's success.
The real reason for its dominance lies in a combination of other, equally important factors that were deliberately and strategically developed. China didn't just offer cheap hands, it created a complete, irresistible package for global manufacturers. One of the most critical elements of this package was the massive and rapid development of infrastructure. The Chinese government understood that to run factories efficiently, you need more than just workers. You need roads, ports, railways, and a reliable power supply. Starting in the 1990s, the government initiated a state-led infrastructure boom of unprecedented scale. It built a world-class network of highways connecting industrial zones to sprawling container ports. It constructed the world's largest high-speed rail network. It dammed rivers to build massive hydroelectric power plants, like the Three Gorges Dam, to ensure its factories would never face power outages. This incredible infrastructure meant that raw materials could be brought into factories quickly, and finished goods could be shipped out to the world with unparalleled speed and efficiency. Alongside physical infrastructure, the government played a pivotal role through its industrial policies. It wasn't a passive observer, it was an active coordinator. The government worked hand in hand with industries, setting ambitious national goals and providing support to achieve them. This included offering subsidies and cheap loans to strategic industries, making it easier for companies to set up and expand their operations. Furthermore, the government invested heavily in education, particularly in engineering and vocational training. This created a workforce that was not just cheap, but also skilled and disciplined, capable of handling the increasingly complex tasks required in modern manufacturing. This government-industry coordination created a stable and predictable business environment that foreign investors found very attractive. Therefore, the magic formula was a combination of four key elements. First, the initial advantage of a vast low-cost labor pool. Second, a colossal state-driven investment in world-class infrastructure that solved all logistical nightmares. Third, a supportive and interventionist government policy that guided industrial development and reduced risks for businesses. And fourth, a continuous focus on developing a skilled workforce that could adapt to new technologies. It was this powerful cocktail, not just cheap labor alone, that created the perfect conditions for China to become the undisputed factory of the world. No other nation was able to orchestrate all these elements on such a massive scale. जैसे जैसे चीन का मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ा, कुछ बेहद खास होने लगा। अब ये सिर्फ अलग-अलग फैक्ट्रियों के अकेले काम करने की बात नहीं थी। चीन ने एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना शुरू किया। शायद यही उसकी सबसे बड़ी और मुश्किल से कॉपी की जा सकने वाली ताकत है, उसकी बेहद गहरी और इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन। सोचिए, एक मॉडर्न प्रोडक्ट जैसे स्मार्टफोन बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए? सैकड़ों अलग-अलग कंपोनेंट्स, स्क्रीन, बैटरी, प्रोसेसर, कैमरा लेंस, केसिंग और अनगिनत छोटे-छोटे स्क्रू और कनेक्टर। चीन में ये सब बनाने वाली फैक्ट्रियां अक्सर एक दूसरे से कुछ घंटों की दूरी पर ही होती हैं, और कई बार तो एक ही इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर। ये जियोग्राफिकल नजदीकी गेम चेंजर है। उदाहरण के लिए एप्पल का आईफोन, जो चीन में फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों द्वारा असेंबल होता है। भले ही उसका प्रोसेसर कैलिफोर्निया में डिजाइन और ताइवान में मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन बाकी ज्यादातर कंपोनेंट चीन के अंदर ही सप्लायर्स से आते हैं। अगर फॉक्सकॉन की असेंबली लाइन पर किसी स्क्रू में दिक्कत आ जाती है, तो कुछ ही किलोमीटर दूर के सप्लायर से नई शिपमेंट घंटों में आ जाती है। इससे प्रोडक्शन में देरी नहीं होती और असेंबली लाइन 24 घंटे चलती रहती है। ये सप्लायर्स, सब सप्लायर्स और असेंबलर्स का घना नेटवर्क एक ऐसी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यही है चीन की सप्लाई चेन डोमिनेंस की असली ताकत। ये एफिशिएंसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के डेवलपमेंट से और बढ़ जाती है। चीनी सरकार और प्राइवेट इंडस्ट्री ने खास तौर पर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए जहां पूरे इलाके किसी एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं। जैसे ये वो शहर दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉल कमोडिटीज का होलसेल मार्केट है।
जहां मोजे से लेकर क्रिसमस डेकोरेशन तक सब मिलता है। शेंगजोउ टाई का वर्ल्ड कैपिटल है, जहां हर साल करोड़ों टाई बनती है। गुआंगडोंग का एक इलाका सिर्फ फर्नीचर बनाता है, तो कोई और रीजन लाइटिंग फिक्सचर पर फोकस करता है। इस स्पेशलाइजेशन से जबरदस्त इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलती है। ये क्लस्टर्स एक वर्चुअस साइकिल बनाते हैं। जब सैकड़ों फैक्ट्रियां एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वहां खास सप्लायर्स, अनुभवी वर्कर्स और इंडस्ट्री को समझने वाली लॉजिस्टिक्स कंपनियां खुद आ जाती हैं। क्लस्टर के अंदर कड़ी कंपटीशन और कोलैबोरेशन से कॉस्ट कम होती है, क्वालिटी और इनोवेशन बढ़ती है। इससे उस इंडस्ट्री के लिए एक्सपर्टीज और पूरी लोकल सप्लाई चेन तैयार हो जाती है। अगर कोई विदेशी कंपनी फर्नीचर बनाना चाहती है, तो उसके लिए गुआंगडोंग का फर्नीचर क्लस्टर सबसे बेस्ट है, जहां लकड़ी के सप्लायर से लेकर स्किल्ड कारपेंटर और पैकेजिंग एक्सपर्ट तक सब एक ही जगह मिल जाते हैं। यही क्लस्टरिंग इफेक्ट चीन की हाइपर एफिशिएंसी का मूल कारण है। कई सालों तक मेड इन चाइना का टैग सस्ते, बड़े पैमाने पर बने प्रोडक्ट से जुड़ा रहा। चीन दुनिया की वर्कशॉप था, जो दूसरों के डिजाइन किए प्रोडक्ट्स को असेंबल करता था। लेकिन ये कहानी अब तेजी से बदल रही है। चीन अब सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री बनकर खुश नहीं है, उसकी ख्वाहिश है कि वो दुनिया की लैब और डिजाइन स्टूडियो भी बने। ये बदलाव देश के भारी भरकम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, इन्वेस्टमेंट और हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में धक्का मुक्की में साफ दिखता है। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में अरबों डॉलर झोंक दिए हैं। इस स्ट्रैटेजिक बदलाव का नतीजा है कि अब घरेलू चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियां वेस्टर्न कंपनियों से टक्कर ले रही हैं और कई बार उन्हें पछाड़ भी रही हैं। हुआवे टेलीकम्युनिकेशन में, DJI ड्रोन में और BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दुनिया के लीडर बन गए हैं। ये कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट असेंबल नहीं करती, ये उन्हें जड़ से डिजाइन करती हैं और इनोवेशन में सबसे आगे हैं। हुआवे भले ही जियोपॉलिटिकल प्रेशर झेल रहा हो, 5G टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर है। DJI ने कंज्यूमर और कमर्शियल ड्रोन मार्केट में पूरी तरह से दबदबा बना लिया है। BYD ने टेस्ला को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेलर बन गया है। ये कंपनियां चीन की वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने की कामयाबी का सबूत है। इस बदलाव को सरकार ने मेड इन चाइना 2025 जैसी पॉलिसी से जानबूझकर बढ़ावा दिया। इसका मकसद था देश की मैन्युफैक्चरिंग को अपग्रेड करना और 10 अहम हाईटेक सेक्टर्स में घुसना। मकसद था विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता घटाना और अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना। सरकार ने R&D को जमकर सब्सिडी दी, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया और कंपनियों के लिए ऐसा माहौल बना दिया कि या तो इनोवेट करो या खत्म हो जाओ। अब चीन सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल करने वाला देश बन चुका है। अब मेड इन चाइना से डिजाइन्ड इन चाइना या क्रिएटेड इन चाइना की तरफ बढ़ रहा है। ये देश की इकोनॉमिक आइडेंटिटी में बुनियादी बदलाव है। जहां एक ओर चीन मैन्युफैक्चरिंग का दिग्गज बना हुआ है, वहीं अब वो टेक्नोलॉजी पावर भी बनता जा रहा है। ये दोहरी ताकत उसे ग्लोबल इकोनॉमी में और भी अहम बनाती है। अब वो सिर्फ दुनिया के गैजेट्स नहीं बना रहा, अब वो उनमें चलने वाला सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और प्लेटफॉर्म भी डिजाइन कर रहा है। ये टेक्नोलॉजिकल छलांग ये पक्का करती है कि भले ही लो एंड मैन्युफैक्चरिंग कहीं और शिफ्ट हो जाए, चीन आने वाले समय में भी ग्लोबल इकोनॉमी के केंद्र में बना रहेगा। दशकों तक चीन का मैन्युफैक्चरिंग साम्राज्य अजेय लगता था, लेकिन आज 2026 में कई बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं, जो इस कभी न टूटने वाली दीवार में दरारें डाल रही हैं। जिस सफलता ने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला, वही अब एक नई समस्या बन गई है, बढ़ती मजदूरी। जैसे जैसे चीनी अर्थव्यवस्था बढ़ी, वैसे वैसे वहां के वर्कर्स की सैलरी भी बढ़ गई। वो फैक्ट्री वर्कर जो 90 के दशक में कुछ डॉलर रोज में काम करता था, अब ज्यादा सैलरी, बेहतर कामकाजी माहौल और सोशल बेनिफिट्स चाहता है। इसका मतलब है कि अब चीन सस्ते लेबर वाले प्रोडक्ट्स जैसे कपड़े और जूते के लिए सबसे सस्ता ठिकाना नहीं रहा। एक और बड़ी डेमोग्राफिक चुनौती है चीन की बूढ़ी होती आबादी।
दशकों तक चली वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अब वहां वर्कफोर्स तेजी से घट रही है। हर साल कम युवा लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, जबकि पुराने वर्कर रिटायर हो रहे हैं। ये बदलाव न सिर्फ मजदूरी को और ऊपर ले जाता है, बल्कि देश की सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर सिस्टम पर भी भारी दबाव डालता है। छोटी बूढ़ी आबादी का मतलब है कम प्रोड्यूसर, ज्यादा कंज्यूमर, जिससे आर्थिक विकास धीमा पड़ सकता है। सस्ती युवा लेबर की वो अंतहीन सप्लाई जिसने चीन की शुरुआती ग्रोथ को हवा दी, अब बीते दिनों की बात है। इन आंतरिक आर्थिक और जनसांख्यिकीय दबावों के अलावा चीन को अब बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन का भी सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर, जो 2010 के आखिर में शुरू हुई, ने दिखा दिया कि एक ही देश पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। टैरिफ और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस ने अमेरिकी मार्केट के लिए चीन में प्रोडक्शन को महंगा और रिस्की बना दिया है। साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे और चीन की आक्रामक विदेश नीति की वजह से कई वेस्टर्न सरकारें और कंपनियां चीन की इकोनॉमी में इतनी गहरी भागीदारी पर दोबारा सोच रही हैं। कोविड-19 महामारी ने भी दिखा दिया कि जब सारी सप्लाई चेन एक ही देश में केंद्रित हो तो वो कितनी नाजुक हो सकती है। इन सब कारणों से अनिश्चितता का एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया है। जो भरोसेमंद, सस्ता और स्थिर मैन्युफैक्चरिंग माहौल चीन ने 3 दशकों तक दिया, अब वो महंगा, जनसांख्यिकीय रूप से चुनौतीपूर्ण और राजनीतिक रूप से रिस्की माना जा रहा है। दुनिया भर की कंपनियां और सरकारें अब जाग गई हैं कि सारी मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह रखना कितना खतरनाक है। अब एक नई ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजी उभर रही है जो प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना और चीन पर निर्भरता घटाना चाहती है। ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में एक नए युग की शुरुआत है जहां दुनिया चीन के विकल्प ढूंढ रही है। चीन से जुड़ी बढ़ती लागत और जोखिमों के जवाब में अब दुनिया भर के बोर्डरूम्स में एक नया शब्द गूंज रहा है, चाइना वन स्ट्रैटेजी। इसका मकसद चीन को पूरी तरह छोड़ना नहीं है, उसका इकोसिस्टम इतना गहरा और एफिशिएंट है कि रातों रात उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बल्कि रणनीति ये है कि चीन के साथ साथ किसी और देश में भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाए। इससे कंपनियां अपना रिस्क कम कर सकती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लागत घटा सकती हैं और सप्लाई चेन को ज्यादा मजबूत बना सकती हैं। और जैसे ही ग्लोबल कंपनियां अपना +1 ढूंढ रही हैं, वियतनाम, मैक्सिको और खास तौर पर भारत मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा हथियाने के लिए सामने आ रहे हैं। भारत अपनी विशाल और युवा आबादी और लोकतांत्रिक सरकार के साथ एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है। भारतीय सरकार ने भी इस ऐतिहासिक मौके को पहचाना है और देश को दुनिया का अगला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। मेक इन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किए गए हैं और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम्स लाई गई हैं। इन स्कीम्स के तहत कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने पर खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। एप्पल जैसी ग्लोबल दिग्गज कंपनियां पहले ही भारत में अपने आईफोन प्रोडक्शन को काफी बढ़ा चुकी हैं, जो इस बदलाव की साफ निशानी है। हालांकि भारत के रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जहां उसके पास बड़ी और सस्ती लेबर का फायदा है, वहीं वो कई अहम चीजों में चीन से अभी भी पीछे है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही सुधर रहा हो, लेकिन अभी भी चीन जितना स्मूथ और बड़ा नहीं है। देश की जटिल ब्यूरोक्रेसी और रेगुलेशन भी विदेशी कंपनियों के लिए बड़ी रुकावट बन सकते हैं। साथ ही भारत को अपने वर्कफोर्स को स्किल्ड बनाने के लिए और ज्यादा निवेश करना होगा, ताकि वो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की जरूरतों को पूरा कर सके। चीन जैसी गहरी इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन क्लस्टर्स बनाने में सालों बल्कि दशकों की मेहनत और निवेश लगेगा। इन सब के बावजूद भारत की रफ्तार थमने वाली नहीं है। भारत के पास कई बड़ी ताकतें हैं, विशाल घरेलू बाजार, मजबूत लीगल सिस्टम और एक तेजी से बढ़ती सॉफ्टवेयर और IT इंडस्ट्री, जिसे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे चीन की मैन्युफैक्चरिंग ताकत आंतरिक और बाहरी दबावों में आती है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का नक्शा पूरी तरह बदल रहा है।
चीन शायद अभी भी सालों तक सबसे बड़ा खिलाड़ी बना रहेगा, लेकिन उसकी पूरी मोनोपोली अब खत्म हो रही है। भविष्य की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड और मल्टीपोलर होगी। भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस स्टोरी लिखने का, चीन से सीखकर और नई ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में